हेलो हेलो। ओके, हे गाइस, वेलकम टू आवर स्ट्रीम। हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं हमारा लाइव स्ट्रीम। एंड ये जो करेंसी देख रहे हो ऑब्वियसली गोल्ड है। 1 आवर का टाइम फ्रेम आप भी देख सकते हो। 1 आवर नहीं देख पा रहे हो, कोई ना, बट इट्स अ गोल्ड करेंसी। यहाँ तक तो आना चाहिए था। एक सेकंड, यहाँ से स्ट्रेट जाता हूँ तो मान लो ये लाइन तक मैं ड्रॉ करता हूँ 1 आवर, तो यहाँ तक आया नहीं, तो मतलब यहाँ तक ओके आया। हाँ, फर्स्ट वन 20। हाँ, 30 पिप्स করে। ओके, अब ठीक है। थोड़ी छोटी कर देती हूँ तो आप सही है। 1 आवर टाइम फ्रेम भी देख सकते हो एंड ऑल दिस थिंग्स आर फाइन। ओके, आर यू एबल टू शेयर माय वॉइस? ओके, हाय ब्रदर, गुड इवनिंग। नेक्स्ट एनएफपी विन करना है। ओके, चलो ब्रो। ওর থেকে 60 পিপস আছে, 60 বা 50 রেখে দাও। এর থেকে 50 তাহলে 3110। তার মানে আরো। हाँ, ओके, नेक्स्ट एनएफपी विन करना है भाई। चलो भाई, हम लोग कर लेंगे विन। इसमें क्या बुरी बात, बड़ी बात है? इसमें क्या बुरी बात है? तो भाई है मार्केट, ठीक है, तो ऑब्वियसली देखो, बिफोर न्यूज मान लो मार्केट यहाँ पर आ गया तो भाई सेल पे गिरेगा। ठीक है, मान लो अभी जो चल रहा है मार्केट, तो भाई धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाएगा। अभी तो बजे 5:15, अभी भी आधा घंटा बाकी है। आधा घंटे पे मार्केट ऑब्वियसली इतना नहीं जाएगा, तो भाई यहाँ तक तो आएगा। ओके, एंड उसके बाद हम लोग डिसाइड करके देखेंगे। मार्केट पूरा साइड में हो चुका है, आज पूरा दिन देखेंगे तो भाई इसके अंदर घूम रहा है 100 पिप्स के अंदर। ओके, एंड इट्स अ 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर भी देख सकते हैं, ये है 1 घंटे का टाइम फ्रेम। एंड 1 आवर्स पे हम लोग ड्रॉ करके आज ट्रेड लिए थे, बाई सेल सब कुछ इसके चक्कर पे। लेकिन प्रॉपरली तो भाई कोई ट्रेड जो नहीं मिल रहा है साइडवेज मार्केट पे। 1 आवर पे देख रहा हूँ अभी, ये 30 मिनट का है। 30 मिनट पे तो भाई पूरा ऐसे चल रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली मेरे को यहाँ तक आना चाहिए मार्केट को। मान लो न्यूज़ के पहले यहाँ तक गिर गया तो वी विल गो फॉर दिस सेल। ओके, तब यहाँ से यहाँ तक सेल करेंगे। ओके, धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाना चाहिए अभी मार्केट। डेली एफबीजी, चलो भाई देखते हैं। हाँ, তোলা হয়ে গেছে, এবার এখান থেকে এটা দিয়ে দে। কিছুক্ষণ পরে দিয়ে দিবি, ঠিক আছে পোস্টটা। আমরা এখানে দিয়ে দিই, কারণ আমার এখানে তোলা হয়ে রয়েছে, স্ক্রিনশট তুলে রেখেছি। এইটার যেটা দিয়েছিস, এটা এটা অলরেডি হয়ে গেছে, ঠিক আছে। টু হয়ে গেছে, হ্যাঁ। এখন সবটা পোস্ট করি না, ওয়েট করতে হবে তো। তাহলে এখন अच्छा, ओके, देखना पड़ेगा। हेलो हेलो हेलो, माय साउंड इज फाइन ब्रदर। हेलो, आवाज तो आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा है? गिव मी योर हेडफोन ब्रदर। क्या बोले? कैन यू हियर मी गाइस? कैन यू हियर मी? इज माय वॉइस ऑडिबल? यस, तो भाई थम्स अप करो। টিভি টু বলেছিল 23, 21। আর এটা কত ছিল টিভি थ्री? अभी कितना चल रहा है मार्केट? 24 से चला गया था, लेकिन सी से मैंने भूल गए।
एक मिनट। मैंने आज बहुत सारे ट्रेड लिया था। ओके। ओके ओके। Should we trade in BTC or gold today? Obviously, gold is like a sideways. Then we have to see the next option. Right now, if you ask me, gold need to go upside. Okay, gold obviously need to go upside. Okay, before news, if it break this, then we will go for the buy. If it break this, then we will go for the sell. इसके अंदर कोई ट्रेड मत करो। यहाँ से हम लोग सेल करेंगे, नहीं तो यहाँ से हम लोग बाई करेंगे। ओके, we have to stay here and watch the market. Okay, this is the 30-minute support area, fair value gap resistance area. So any one breakout only we can take a trade. Except that we will see the BTC USD guys. ये क्या था भाई? मेरे को समझ में नहीं आया। इतना बड़ा फॉल डाउन हुआ था या कुछ और? ओके, ये वाला मैंने ट्रेड ओके मैंने कब दिया था? कल दिया था ये वाला ट्रेड आप लोग को। Yesterday I have given you this trade. मार्केट ऐसे गिर रहा है सेल की तरफ। द रीजन इज हियर इज द फेयर वैल्यू गैप। ये जो मैंने ड्रॉ करके रखा था, ये वाला जो जोन है, दिस इज द फेयर वैल्यू गैप जोन। मार्केट नीड टू फॉल इफ बिजी। कैसे नहीं, फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ये है गोल्डन जोन। ओके, फिबोनाची रिट्रेस। दिस इज बीटीसी फिबो रिट्रेस। कैसे ड्रॉ करें? कल मैंने ड्रॉ किया था यहाँ से यहाँ तक कुछ तो था। हाँ, यहाँ से कुछ ड्रॉ किया था मैंने, यहाँ से इस तक आया था, तो मतलब ये वाला हाई है, यहाँ वाला हाई कुछ मैंने लिया था तब। ठीक है। एंड अभी रिसेंटली देखो तो यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली सेल है मार्केट मेरे लिए। बीटीसी अभी के लिए सेल है। कहाँ तक सेल गिरेगा? ये वाला लो तक सेल गिरना चाहिए। अरे और एक दिक्कत भी आ रहेगा। इफ यू डू अ सेल, ओके गोल्डन जोन टच। मार्केट नीड टू फॉल up to how much we can expect? ये थोड़ा ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट 100% इज हियर। ठीक है, तो मान लो 78 मिनिमम। मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 78। ओके, खुश रहो मस्त रहो भाई। सेम टू यू ब्रदर। आप भी खुश रहो। आप तो भाई खुश रहते हो। So should we trade in BTC? I just showed you the BTC trade, okay? And हम ऐसे मजाक करते हैं। KNT, welcome to our stream market, brother. Okay. So BTC for me it's a sell, and if you just ask me what will be your ASL and TP, short is from here. Just will show you. TP is like here, and ASL will be like here, and this will be a very swing trade. Not a. It will take nearly 2 days, might. Okay.
It might take 2 days, but this will be your trade. 3 is to the trade. Okay. Break even cost to cost you can put here. That means it's 100 pips. Okay. Gold, gold. Gold need to go upside. And it's doing a sideways. Matlab double bottom, double up. Okay. Until it make a breakout, it's very hard to take a trade. Okay. So simple way try to define this. গুড ইভিনিং ব্রাদার, কেমন আছো? খুবই ভালো ব্রাদার মোহাম্মদ রিয়াজ। আপনি কেমন আছেন? ঈদ কেমন কাটলো? ओके। सो कौन कौन बाय पे है, कौन कौन सेल पे है गोल्ड पे अभी? आज कौन कौन ट्रेड लिया था? Actually, we posted only one signal in our normal group, your Forex Gold. The reason, if you just see, okay, only one post. No, today, yeah, today we posted only one signal with the TP2. Okay, and I took that trade also. अभी तो भाई मेरे लिए बाइंग है मिनिमम. If you ask me how much minimum you can expect up here. If you think it's a small, we just calculate from 22 to 25. That's a 30 pips. Not indicator. I'll just put a line. Okay. See the number. It's like going upside. Okay. सेल किया था 3131 से और टीपी था 3131 से सेल था एंड टीपी था 3116. ठीक है क्या? 3116 एंड 31131 3131 से आपका सेल है 3116 10 15 6. हाँ, दैट विल बी अ परफेक्ट ब्रदर. परफेक्ट है. लेकिन अभी के लिए तो भाई यहाँ पर सपोर्ट की तरफ है, तो इसलिए मैंने बाई पे आई मीन सेल पे नहीं गया. जब तक मैं देख रहा हूँ कि भाई ये वाला ब्रेकआउट नहीं करता तब तक आई एम नॉट गोइंग इन सेल. एंड इट्स अ 1 आवर कैंडल, तो ऑब्वियसली भाई 1 आवर पे ज़्यादा फोर्स रहता है ट्रेड पे. एंड अभी तक तो भाई मार्केट बाई की तरफ जाना चाहिए और भी थोड़ा बाई की तरफ जाएगा, उसके बाद रिट्रेस मिलेगा. ओके. बाई की तरफ जाएगा मार्केट. जस्ट सी द नंबर, इट्स इंक्रीजिंग and sometimes decreasing also. 748 485 2265. Okay, actually I need to go outside, then we're gonna get a selling move. Let's see, I will just also check. Okay, okay, so it's a 15 minute. Okay, okay. Yeah, so not really brother, don't take a sale now, because if you just see it will need to go upside, or if you draw any trail line
Below you'll find out like this will be your trail line, but not a strong trail line, but like that. If I just draw, you'll see normal trail line, or if I draw one more trail line like from this area, obviously it need to come upside, grab some liquidity, then need to go down. I'm in a buy side. I'm in a long. I'm in a long side. Okay, not taking any trade, but it seems market need to go upside. What's your point of view, guys? आप लोग को क्या लगता है? आप लोग को क्या लगता है, ये इससे बाई जाएगा या सेल पे जाएगा? 30 मिनट पे मूवमेंट ज़्यादा नहीं है, 1 आवर पर बाई सेल हो रहा है. If I go with a long time frame, I can see it need to go upside. Okay, 30 मिनट में इतना बड़ा फेक मूवमेंट किया था, सेल मूवमेंट देकर बाई की तरफ चला गया. Okay, don't take any trade in center area. You can take a one more trade from like this area, 10110 after closing a candle, forming a new candle. यहाँ से एक नया कैंडल फॉर्म होने दो, रेड कलर कैंडल, तब सेल करना. नहीं तो अभी इसके अंदर वेट करो, क्योंकि अब मान लो कि भाई यहाँ से यहाँ तक सेल करने के प्लान करो, ऊपर की तरफ चले का जाने का चांसेस है. सो इसीलिए बोल रहा हूँ मैं. ओके, 3080 is upcoming. लेट्स गो, लेट्स सी. साथ तो नहीं बोल सकते 3080 जाए कि नहीं, बट हाँ, वी कैन. 3080. ओके, what is this? I don't know, but I have drew this. Okay, the order block, the liquidity, demand, all are here. Are you guys taking any trade? Are you guys taking any trade? Let me know. कोई कोई ट्रेड पे है क्या? Are you in a trade? Are you guys in a trade? कोई ट्रेड लिए हो तो बताओ. न्यूज लग रहे हैं तो गोल्ड बाय. ठीक, बाय ठीक ना भाई? यस ब्रदर. न्यूज पे नेगेटिव है. इफ इन अ डॉलर, ओके, यूएसडी पर सिर्फ ऐसे होता है. इफ यूएसडी नेगेटिव, देन गोल्ड गोस अप, बीटीसी गोस अप. इसी तरह होता है, ठीक है. ओके, बाय 3 ओके. 250 पर रिव्यू किया था, तो उसके बारे में तो बहुत सारे लोग रिव्यू भी करते हैं, उसको भी तो बहुत सारे लोग कुछ गलत गलत बोलते हैं. तो क्या करे भाई, उसका बोलना ही उसका जॉब है, तो वो वही करेगा. टू फेस, यस आई एम बाई 13122. कौन सा है? अरे नहीं बोला, टू फेस यूट्यूब चैनल में उसके कुछ बोला. क्या है नेगेटिव आपके लिए? मैं रिव्यू किया नेगेटिव आपके लिए. यार, आप लोग इंटेलिजेंट है ना, तो कुछ समझ लो. क्या इतना बकवास करना. सुना है बहुत लोग आके हम लोग को बोला है, क्या हम लोग इतना भाव नहीं देते.
हाँ हाँ, हमारे पास पैसे नहीं है, वो नहीं है। इतना हैं? भाव नहीं देते भाई, क्या फर्क पड़ता है। भाव रिलोड। देंगे तो क्या होगा उसका, चैनल जैसे कि एक बंदे आके बोल रहा था कि खुद बेच रहा है, ओ, ठीक है, तो उसका चैनल ग्रो कर जाएगा। बच्चे आदमी बच्चे होने दो, अरे क्या क्या हुआ बोलते भाई, हैं। आज नेटवर्क नहीं चल रहा क्या? हाँ, रिलोड। नेटवर्क का तो इश्यूज है। यहाँ पर भी नेटवर्क नहीं चल रहा इसलिए। Okay, so buy 3080. I mean target 3080. That means you are going in a sell side. Okay, you are going sell side 3080, which is like here. I'm not going sell right now until it break this area. Because I can see strong buyers are sitting here. Obviously it need to break, then only we can go for the sell. Okay. So wait patiently, we will take a sell. Or if you're in a buy, you can come out in a 3110. So you 3110, you have to come out. Career also. I'm from 3120. To, 3120, you're in a buy. No, don't take a buy from this center area, na. Don't take a buy from this center area. Take one zone, market one zone, take a trade from there. If you ask me, but you did so, it need to go upside. You can come out like in a 17, okay? 17 you can come out cause market then will fall up to 14, 15. I'm just looking at 30-minute time frame and I'm telling you. Okay. Okay, bro, this is perfect entry or short on gold, sell on gold with stop loss of 3125. Okay, 3125. 25 is a soft loss. Regarding this, you just say, market being a full of sideways, brother. Okay, I'm just not entering for that. 25, which is like here, ASL. If you like, you can make it, brother. I'm not taking any trade in this area. I just want to see any breakout. Okay. So first of all, we have to see regarding long time frame. Okay, long time frame. You can see this is the high area, this is the low area. Okay. Then you mark it in your chart. One low area, one high area. If any one side break, take a trade. Don't take any trade between this area. Okay. I hope you understood. Don't take any trade between this area because there will be a full of fake out and you might make a profit. If it break this, then we can go for the sale. If resistance breaks, then we can go for the buy. Until then, let it happen. Whatever is happening here, just leave it. We will ignore because like sideways market, the way it gone up, that much it gone down. Okay. So in a one day also, if you just see in a day chart, okay, not proper buy, not proper sell. So like up and down, it's moving on. 4 hours also same, up and down. Okay. Okay. Trading is not opening since morning. What to do? It happened, brother. Same for me. It was not working. Then after I close, then after it's working now. Few returns area zero will look in bigger time frame. Yeah, brother. I saw that. I saw. I saw no. Okay. Even though
If I draw from this area to this area, I can see that this is the fewer retrace area 0.50. That is also true. And we will see regarding 545. Okay, so it's 540 gonna be a news time. Let's see. Okay, let's see. Okay, let's see. Until it break, we are not taking any trade. Okay, break this area, then we can go for the sell. Only 30 to 40 pips we have to wait. 30 40 pips wait करो, उसके बाद हम लोग ट्रेड लेंगे. Okay. I'm still not sure yet. Okay. I'm sure about it. जब पे ही एकदम लिखे ने. Gold buy or sell. अब बताओ अर्जुन. Bro entered a sell side in gold with yesterday day low, 3100 first target. Bro, if you ask me, I'm not like preferring any trade in this area. How can I take a trade until I found a proper support area or proper a resistance area? Okay. If I take any trade in this area, if we are lucky, okay, we're gonna get a profit. If not, if you see morning, it made us so much of time to hold the trade. Okay. Then after it suddenly gone upside, then after from here it made a move downfall. After this I made a profit in this also, then after I made a profit in this area, this buy. Okay. And right now I haven't taken any trade because I have to see any zone now. So in this area, how can I take a trade? If you see, this is the 15-minute time frame. 15 minute. So 15:30 1 hour, 1 hour pass, market is been side. Okay. 1 hour pass, market is in the side area. So that is the reason I'm not taking any trade. But I can see that 1 hour support is there. So obviously, if it follow the support, then it need to go up to 3134.
but minimum 3125 or 3126, that is my target. But I'm not taking trade. If you see here, it's doing a slow move. Okay, it's making a slow move. Try to mark one high and one low. So that is the reason I have marked 1 hour high. Okay, I mean like resistance here, support here. So if market touch here, we can go for sell, resistance and support like here. Until that, I am not taking any trade because in this area might get a profit or losses. Already morning we have taken one or two trades, so it's fine now. Why should we enter now without like proper understanding? It will be a very risky. If we have like any knowledge regarding, and then you can enter. Otherwise, if you're confused, don't enter, and don't put like hope. Okay, don't put hope and trust. Try to understand the logic behind the trade. Okay, so if you take now, if you, I don't know why you're gonna take a buy or sell, but if I follow this area, it was the support, market has a break upside, so for me it need to follow the continued trend. Okay, that is the reason I'm just going on upside. If it break the support, I will go for the sell, or if it break the resistance, I will go for the buy. Otherwise, I'll follow this, put my SL above this resistance and go for the sell. Okay, until that, take a time, watch it. Okay, we might get a buy side profit. News in 3 minutes. What is your point of view, guys? 3 मिनट के आपको क्या लगता है? एंड ये अफेक्ट पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एडीपी नॉन फॉर्म 2 मिनट बाकी है अभी भी। मेरा तो लग रहा है कि भाई कंटिन्यू फ्लो पे मैं बाय की तरफ जाना चाहता हूँ। हाफ मिनट इज सर। There's no proper zone to take it. पॉजिटिव है तो भाई गोल्ड गिरेगा, गोल्ड गिरेगा, लेकिन गिर रहा है क्या? अफेक्ट कुछ नहीं हुआ, गोल्ड गिरेगा, बट नेगेटिव है। ओके, पॉजिटिव है मार्केट का न्यूज़। तो यू विल फाइंड आउट अ स्मॉल मूव डाउन साइड। ओके, बट स्मॉल मूव, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। गोल्ड गिरेगा बट छोटा गिरेगा। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर एसल रखकर 20 पिप्स का मूव मिले तो भाई सही है। ओके, क्योंकि भाई कोई मूव नहीं मिले मार्केट पे, इसलिए बोल रहा हूँ। या न्यूज़ 1 मिनट पे हो चुका है मार्केट का न्यूज़। ओके, ओके, आई गॉट इट ब्रदर, आई गॉट इट। If I draw the Fibonacci, I can get a selling trade. That is also true. Like this high or for this high and this low, I can get it that. That is also okay. I can get it that. And it is 3125. Okay. Yeah, I can get it that also. If I take it this high and this low recent market, so from this high to this low, I can see that this is the golden 0.5 has touched. Okay, and ASL was like 26 and above. 27 you should have keep. If you take a trade now also, you have to put your ASL like 27. Okay, and if I go to the 30 minute also, if I draw the recent high and low also, okay, all your market is obeying this Fibonacci retrace.
You will get it, but staying with the you will get it, but it's okay na to wait still more. Yeah, if you have a logic, you can enter, but otherwise, no use of entering the trade. आवाज पता है इससे न्यूज़ पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ा। ओके, न्यूज़ पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ा। ऐसे धीरे धीरे करके चल रहा है मार्केट भाई। बेकार मार्केट बेकार। कहाँ पर कुछ आवाज आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ, से यूएसडी। सर को तो गिरा है फिर से। सेल पे गिरा है फिर से। ओके, ये बोलिए मैम। seeing it. और किसका किसका ट्रेड चल रहा है, और किसका किसका ट्रेड चल रहा है, बाय की तरफ या सेल की तरफ। मैं तो भाई वेट करो ये वाला जोन तक 3110 आने दो, उसके बाद मैं बाय की तरफ या सेल की तरफ मैं डिसाइड करूंगा, ठीक है। आप लोग बताओ आप लोग कौन कौन ट्रेड लिए हो, आप लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। so I'll just put a poll, you can keep there. ओके, तो व्हाट्स योर व्यू ऑन गोल्ड गाइस, आप लोग बताओ अभी। मैं देखता हूँ गाइस आप लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, just put the vote and let me know in a comment also why you think it's a up or down। बीच पोजीशन पे इसीलिए भाई आया था 17, चला गया 30 पिप्स ऊपर की तरफ। ये होता है भाई, ना जाना चाहते ऊपर की तरफ, ना जाना चाहते नीचे की तरफ। जो जो बाई की तरफ जा रहा है उसका सेलिंग पे लॉस करवा रहे हैं, जो जो सेल सोच कर नीचे सेल दे रहा है उसका बाई की तरफ 30 पिप्स का लॉस करवा रहा है। ये हो रहा है भाई आज का मार्केट पे पूरा। देखोगे तो भाई एक तो भाई जोन मार्किंग कर लो, उसके बाद वेट करो, पेशेंस रखो एंड वेट करो। हड़बड़ी नहीं करेंगे हम लोग ट्रेड के लिए। हड़बड़ी करने का नहीं। देख रहा हूँ मैं भी। सर एनी ट्रेड आप बताओ भाई। आई थिंक मार्केट हाई जाएगा 3139, हाई लिक्विडिटी लेने के लिए। ओके ओके, गोल्ड 3154। ओके, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज। ओके ओके, अंजुम अकरम, अब बताओ ब्रदर आपको क्या लगता है, आपको गोल्ड ये वाला जोन देखकर आपको क्या लगता है, ये वाला देखकर बाई जाएगा या सेल पे जाएगा। हाँ? एक ही बार में तो भाई 17 से 20, मतलब 30 पिप्स तो ऊपर इंस्टेंट चल रहा है। सेलिंग के चक्कर देकर भाई जा रहा है ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू गाइस। मैं तो भाई ड्रॉ करके रखा हूँ भाई, एक सपोर्ट ड्रॉ किया भाई एंड देख रहा हूँ भाई यहाँ पर एक
रिट्रेस का जोन, तो एवरी रिट्रेस विल गेट 25 टू 28, मतलब 30 पिप्स का ऐसा रहेगा। यहाँ से हम लोग सेल दिया तो, नहीं तो हम लोग यहाँ से रिट्रेस से रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे, ठीक है। अभी तो भाई कोई ट्रेड नहीं लेंगे, बैठेंगे भाई ऑब्जर्व करेंगे मार्केट को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच द मार्केट। इथेरियम भाई ऊपर की तरफ गया था, हाँ ये भाई कैंडल क्लोज नहीं किया बट गॉन अपसाइड। हम लोग को दिया था मैंने ये कल का ट्रेड इथेरियम पे, इथेरियम एंड बीटीसी दोनों दिया था, लेकिन ये तो भाई आज का ट्रेड था। लेकिन ये ऐसे ही जहाँ पर मार्केट है वहां पर ही चल रहा है। फिबो रिट्रेस को मार्केट को फॉलो करके नीचे की तरफ आना चाहिए, ठीक है। अभी नहीं आएगा तो भाई टाइम लगेगा आने पे मार्केट को। यही देखोगे तो भाई यही 20 पिप्स का है, छोटा सा कैंडल सा 20 पिप्स। एंड एसजेडीजेपीवाई, इसमें कोई ट्रेड नहीं है। एसजेडी यूएसडी, मैंने ये जो सपोर्ट बनाया था थोड़ी बहुत टाइम पास किया, सबका लिक्विडिटी जिसका जिसका बाय लिया था सबका लॉस करवा के मार्केट चला गया ऊपर की तरफ। जीबीपी जेपीवाई, ये था भी ट्रेड एक ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक गया था मार्केट, ठीक है, up to this. After that market fall, hit all the resistance, those who have taken a buy, then those who have gone for the sale also, जो जो यहाँ से सेल लिया था सबका ऐसे हिट करके उसके बाद टारगेट हिट किया। ये तो भाई होता है भाई। और एनजेडी, 30 मिनट पे चलो, 30 मिनट पे देखते हैं। और भी नीचे आएगा, थोड़ी बहुत नीचे आएगा, ये वाला जो लिक्विडिटी है ना, लिक्विडिटी को लेने के लिए आएगा नीचे। और एनजेडी और न्यूजीलैंड डॉलर, ओके, यूएसडी कैड, देख रहा हूँ अच्छा सपोर्ट था 30 मिनट का। यही है, ये वाला भी ब्रेक कर दिया तभी और भी ऊपर जाएगा। और ये ऑट कैड, ओके, ऑट कैड में ये वाला ब्रेकआउट किया तभी ऊपर, नहीं तो भाई एक सेल का ट्राई कर सकता और एक कैंडल क्लोज होने दो। 4 मिनट इज मोर देन गो फॉर दिस सेल ऑट कैड, ठीक है। मिनिमम यू विल गेट अ मिनिमम, योर प्रॉफिट विल बी दिस मिनिमम। ऑट कैड पे आप लोग सेल करोगे तो देखने में छोटा लग रहा है भाई, बट इट्स अ व्हाट यू कॉल्ड 2 1, ओके। तो मिनिमम 20 पिप्स वो ब्रेक में रहेगा। मैं सैटरडे को तो ट्रेड नहीं करता, इसका थोड़ी बहुत ऐसे साइड में स्विच चल रहा है, सेलिंग पे जाएगा। ट्रेलर ब्रेकआउट किया है, यूरो जेपीवाई, और भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बाकी करके रखो, बाई की तरफ जाते तो भाई वी विल गो फॉर द लॉन्ग, अदरवाइज इफ इट ब्रेक वी विल गो फॉर द सेल, ऐसे, ओके। सो इफ वी गेट अ ब्रेकआउट रिट्रेस मार्केट बाय अप टू हियर, और इफ इट कंटिन्यूसली गिरता जाएगा, मार्केट ने एक थोड़ी सी पुल बैक दे दिया तो भाई टाइट से अप टू हियर। ज़्यादा साउंड শুনছিস सपोर्ट लेकर यहाँ तक मार्केट गया था, उसके बाद गिरा है। अभी जीबीपी यूएसटी को यहाँ पर एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर होना चाहिए, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाए इट विल गो अपसाइड मिनिमम अप टू दिस एरिया जीबीपी यूएसटी, ओके। जीबीपी यूएसटी पर
मान लो ये वाला ब्रेकआउट करता है तो भाई तभी मार्केट जाएगी यहाँ तक। यू हैव टू फॉलो। बार बार मैं दूसरे करेंसी पर नहीं जाऊंगा। आप चाहती हो कैंडल को क्लोज होने 2 मिनट बाकी है, 2 मिनट के बाद ऊपर की तरफ क्लोज हो जाते तो भाई डायरेक्टली यहाँ तक बाय करना। एस एल टी पी रिगार्डिंग योर इक्विटी। ओके, एस एल टी पी रिगार्डिंग योर इक्विटी रख सकते हो जीबीपी यूएसडी पर। यूरो यूएसडी। ओके, ये वाला बाई जो था मेरा, देख सकते हो भाई, आया था 50%, उसके बाद चला गया। ओके, या यस, गोल्ड गिर सकता है। अभी नहीं भाई, जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं करता तब तक नहीं गिरेगा। गोल्ड अच्छा गिर सकता है। आज तो वॉल स्ट्रीट ओपन पर ट्रेड करे, वही सही रहेगा। गोल्ड इज अ लॉन्ग ब्रदर, तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया कि गोल्ड हम तो भाई बाय की तरफ ही है, लेकिन आप लोग को बताया कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करो। यानी ये वाला एरो मैंने दिखा है, जब तक ब्रेक नहीं करते तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। ओके, तब तक हम लोग नहीं जाएंगे सेल के लिए। एंड ये तो भाई जो जो 24-25 पर एसएल रखा था भाई, उसका तो भाई हिट होने वाला है। ओके, बट आई टोल्ड यू कि भाई अभी मत करो ट्रेड, बट आपके पास बैलेंस तो लॉन्ग की तरफ रह सकते थे। ओके, आई थिंक मार्केट हाई जाएगा, हाई लिक्विडिटी लेने के लिए। इसके लिए तो भाई हम लोग को देखना चाहिए, ये वाला भी ब्रेकआउट कर दिया, रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, तभी जाएगा ऊपर की तरफ। नहीं तो यहाँ पर जो भी सेलर्स है ऑब्वियसली ऊपर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी सेलर्स है सबका एसएल हाई पर ही है। ओके, सो दोस्त आर होल्डिंग फ्रॉम लाइक 39, ऑल द एसएल्स विल बी हियर, ऑल द एसएल्स विल बी हियर। तो ऑब्वियसली मार्केट को जाना पड़ेगा ऊपर की तरफ बाय के लिए। एंड इट्स गोइंग फ्लो द ट्रेड। मैंने तुम लोग को 1 आवर पे दिखाया था, 1 आवर कैंडल पे, वो भी बताया था कि इट विल फॉलो द ट्रेंड। ओके, सपोर्ट पे है, ट्रेंड पे जाएगा मार्केट, एंड इट कंटिन्यूसली डूइंग दैट। हम लोग तो भाई पेशेंसली वेट करके लेना पड़ेगा ट्रेड। ओके, ओके, एंड कल कोई बहुत या भाई बहुत सारे लोग तो बोला था there is a buy on BTC on 1 minute. If you see buy, वो buy is only for scalping। BTC पर जो भी buy देख रहे हो, ये वाला ऊपर जा रहा है ना, इसीलिए भाई वो भी ऊपर जा रहा है। 1 मिनट पे लॉन्ग कहाँ से देख रहे हो भाई? इसको देखकर, इसको फॉलो कर कर बाय बता रहा हूँ। बड़ी फीवर इंटरेस्ट है ऊपर। ठीक है, ये वाला तुमको कितना मिलेगा, याद है कि मिलेगा प्रॉफिट? ठीक है, फीवर इंटरेस्ट है। 1 आवर पे ये वाला हाई टू ये वाला लो ट्रैक किया तो फीवर इंटरेस्ट तुमको यहाँ पे मिलेगा, जहाँ पर इसको ओबे ओबे करके रेस्पेक्ट कर रहे हैं अभी। तो इसको देखना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी जहाँ पर मैंने ड्रॉ किया तो वहाँ पर ही मार्केट है, अप एंड डाउन कर रहा है सिर्फ। एक काम कर सकते हो, जो जो बाई की तरफ जाना चाहते ये वाला ब्रेकआउट कर लेना, तभी ये हाई तक जाना बाई के लिए। ठीक है, इफ यू वांट टू गो बाई, देखो आपका सेफ के लिए मैं बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तो भाई तुम लोग को यहाँ से बाई बता सकता हूँ या सेल के लिए बता सकता हूँ। बट क्या होगा कि भाई जब एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद ट्रेंड को तुमको इजीली कैप्चर कर सकते हो। उस फॉलो ट्रेंड को फॉलो करके तुम ट्रेड लोगे तो भाई प्रॉफिट होने का चांसेस ज्यादा है। ओके, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, रुक जाओ।
ओके, इसके ऊपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा तभी बाई की तरफ जाना, क्योंकि यहाँ पर फीवर रिट्रेस है इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ओके, बहुत कुछ हम लोग को, ऐसे नहीं कि भाई देख लिया ट्रेंड को, देखकर हम लोग ट्रेड लेंगे तो भाई हम लोग का लॉसेस का चांसेस है। दिन में एक का दो ट्रेड करो, पूरा दिन बैठकर देखो, मार्केट को समझो, उसके बाद ट्रेड करो, ठीक है। अभी यहाँ से भी हम लोग बाई की तरफ नहीं जा सकते जब तक ये वाला ब्रेकआउट ना करे। ओके, ब्रेकआउट इज 27। if 27 breaks, then only you can expect a buy up to 33, that means 50 pips। okay, एंड इफ यू जस्ट सी, ऊपर से भी एक ट्रेंड की तरफ तुम फॉलो कर सकते हो। तो हाँ, 27 ब्रेक किया, 31 तो भाई मिनिमम, मतलब आप समझ सकते हो 30-40 पिप्स तो भाई इजिली मिल जाएगा तुमको। ओके, अभी भी कौन कौन बाई पे है अभी भी, और कौन कौन सेल पे है? हाँ, कौन कौन बाई पे है, कौन कौन सेल पे है? मैंने तो भाई सुबह लेकर बैठा था, अभी लाइक इस जोन पे। ओके, खोल कर मैं 1 मिनट पे देखूँ तो, सॉरी सॉरी सॉरी। नमस्ते। नमस्ते, राम राम जी। हाँ, मैं बस
और जेपीवाई है ये। ओके, दिस द और जेपीवाई करेंसी, यहाँ पर छोटा सा पुल बैक मिल सकता है हम लोग को, ठीक है। यहाँ से ऊपर की तरफ पुल बैक मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर फेयर वैली कैप है, तो फेयर वैली कैप को फॉलो करके इसके ऊपर ये सेल रखकर आप लोग ले सकते हो एक सेल की ट्रेड। और जेपीआई पे क्यों मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर भी देखोगे तो भाई एक अच्छा खासा पुल बैक है यहाँ पर। ओके, तो ऑब्वियसली इफ यू वांट टू टेक अ ट्रेड, अभी के लिए लॉन्ग पे जाएगा मार्केट, देन आफ्टर यू माइट गेट अ प्रॉफिट इन दिस एरिया। ओके, सो इस तरह छोटा सा लगोगे तो भाई इसके लिए देखें तो कितना है, 1:35 है, ये है 1:1, 1:4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, मिनिमम वी विल गेट अ 1:2 इस पे। गोल पे क्या हो रहा है भाई, हलचल हलचल ऐसा हो रहा है, ऊपर की तरफ जाना चाहिए, अप एंड डाउन कर रहा है इस पे 1 मिनट पे। आई जस्ट सॉ 1 मिनट थोड़ी बहुत पुल बैक आना चाहिए था, ऐसे मूव कर रहा है। यू विल फाउंड आउट 1 मिनट और अ ब्लॉक फायर वाली गैप। ओके भाई, स्लो है, दूसरे करेंसी पर ही हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ओके, गोल सेलिंग लेवल्स। सेलिंग भाई देखो, सेलिंग के लिए तो अभी भी टाइम है हमारे पास, अभी हम लोग सेल भी नहीं करेंगे।
So I hope you can hear my voice. It's simple. I do trade. Okay. First of all, I just go to the long time frame, see the structure, then enter in a trade. First of all, if I see in a 1 hour time frame, I have marked the zone just like this, like a support area, and this will be my resistance where market did a proper. And these are the sub area where market did a retrace area, rejection area. So this is not a like proper trading area, but if you are like a scalper, you can keep your ASL like 30 pips, go for the 40 to 50 pips of trade, and I just mark the high area and low area, so I can see this is resistance, or you can call it as a fair value gap. Okay, where market doing a proper retrace. So I have to wait for market to touch here. If I see breakout and bigger retrace, then I go for the sell. And if I see that it made a upside breakout, then I go for the buy. So that way I take a trade. After the breakout, I take a trade and I wait for the candle to close and see the next candle what is candle doing. Okay, like its behavior. Right now I just saw in a 1 minute time frame. In a 1 minute I can see that market did a breakout. Okay, it made a breakout, so breakout structure is done, and after that it's doing a time pass. So that means here inviting buyers, sellers both are inviting here. So if we want to go for the trade, that means we have to keep a 20 pips of ASL, which is 22 ASL, and we can go for the buy up to 30 pips, which is 27. Okay, so that way we can set up our plan. Okay, like 24 we take a trade, 22 our ASL like this. Okay, this area, and TP up to 27 this height. So if we are lucky, we'll make it a profit. Otherwise, 20 pips of ASL will go. So that way, I just mark out breakout structure, change of character. I do take a trade. Right now, I'm just expecting a long. Slowly, it need to go upside. Okay, slowly it need to go upside. Obviously, let's see what happen. Okay, and market is become very slow now. You can see it's doing a time pass here. Then after suddenly one move. Then after it's doing a time pass here. So it distract and make us to wait. Okay, make us to wait, because you can see this also a retrace area, so probably buyers also been here and sellers also been here. So if anyone wants to do a breakout, it will make a huge fall. If it make this, then market will fall a huge downside like this. Otherwise, if continuously goes upside, one more candle like from here, then it need to go up to here. So I have to watch and see the breakout and see the trend. I can see it's a bullish trend. It's continuously going in a bullish. So if it bullish trend breakout, then means we will get a change of character, and I go for the trade. Okay, like that. For your profit running trade not showing. I'm not interested to show, brother. Okay, मैं अभी इंटरेस्ट पे नहीं हूँ शो करने का. And already I have taken money, so just leave it. फिर ऐसा कोई बात नहीं है. I'm in your VIP group. I love your channel. Thank you, brother. But if you ask me, obviously, I don't post that much signal in VIP groups. So if you make profit, if you make losses, you have to say our Telegram members. Obviously, I don't do take a trade. Okay, I don't give trade. If you ask me. So what is your point of view, guys? If I just put my SL in 19, 23, 90, that means 40 pips of SL. And if I go for the longs, will it be okay?
Huh? What do you say, guys? I would just want to put my ASL like 40 pips. So that means it's up to here. I'll put my ASL below this area, and I might get go for a trade. Otherwise, I have to come out below this area. I have to think this. I have to think. I have to see the candle makes a good move in a long. Then suddenly I will enter in a long side. Right now it's doing a time pass now. So that is the reason I'm not entering now. I have to check this out. We'll buy position now. Uh, Wait, brother. Okay. Do you use trailer or OB? Or mostly I used OB, but sometimes if I get a confusion and if I don't find out any OB, then I have to use the trail line because I can see OB is here, right? And there is no OB right now. I can see one more primary OB is here. So it might OB this OB, and sometimes if I wait for the order block, market can touch this trail line and can go upside now. So sometimes I draw the OB and trail line and I check that also. Okay, I can see upside also a trend. So it's very confusing right now. Look at this. Okay, very confusing right now. Whatever you're just gonna predict it now in a market, we don't know will make it or what. Probably it's not going upside, not going downside. Okay, now it's in a trend. Let's see, let's see. Wait, oh, wait. Okay, if you see, it hasn't touched the order block, but sometimes it's making a buy move, right? From like this area. So if I follow this order block, then what you see here, it obey the trail line, it gone upside, right? So that also happens. Okay, can I make a course? Okay, I just use simple okay, order block, fair value gap. Then after sometime I check the supply demand. Then after breakout, okay, and retracement, I take a trade. I wait for a long time, brother. If you ask me how often I take a trade, I wait for a long time. If I get a chances here also, I don't take a trade until I make a proper like, long and high in a long time frame. I mean like, so I had to see a proper long and high. If I see 1 hour, this is high and this is the okay low area, but I can see market is doing a respect this support area, this resistance area, and sometime here. So I have to mark all this thing, and until the market comes to that area, I have to wait patiently, and I have to see that it is obeying or what. Then after the one candle close in a 1 minute or 5 minutes, then after I take a trade. So I have to observe the market. I observe the market more. You can see this, okay? Just the way I told you, if I follow the order block, that means order block was in a 5 minute here. You can see order block is here in a 5 minute, but you can see it obey the trend line, it gone upside. So I do follow every strategy, it's very good. Sometimes I use Fibonacci also to identify the trend. Okay, so it should we should have a knowledge of all the strategy, but master only one strategy. Okay, what is your view, Sandeep? My view is buy side, brother. Regarding trade, I can see this, okay, and I can see the support. Until it break this, I'm not going on a sell side, okay. I might get a loss like up to here. If I take a trade, I can see the order block is here, okay. This is the order block and this is the fair value gap, and you can see market hasn't mitigate. That means market hasn't touched this area to this order block, not even single time. So that means this is the valid order block.
Okay, I have a valid order block here, and it's same area as a support area. That means I have to take a trade from 14, or if I take any trade right now, that means I have to put my SL below 10, and I have to do the swing trade. Okay, because if I do this scalping from like 22 to 14, that means more than 100 pips I have to hold the trade, and I'm gonna hold up to this 3148. Let's see. Okay, let's see. And we have a primary order block here, and we have a strong order block here. So obviously always try to focus on this order block. If you miss this one also doesn't matter. We always tell you, whenever you find out imbalance, market will come to the that zone to fulfill the balance. Okay, to make it balance, and it will make a mitigate or intersection. Okay, so this will happen. So we have to take a time, watch the market, then take a trade. In which time zone you trade on London? Sometime I do trade on London, but yeah, sometimes I take one or two trade. If you ask me, I don't take too much trade, because if I wait for one zone, I mean like from this area, I hope you can see it came like 16. That means like Wednesday, 12/4/16. That means 4 o'clock. It came here. So I took a 4 o'clock buy trade from this area. Until that, I haven't taken any trade. And if you see one zone which is like resistant here, that was like 14. Okay, 14, 15, 16. That means after 2 hours, 3 hours, I've been waiting. Then after I took one trade, then again I took a one trade. So I have to wait for a long time. And obviously I check a long time frame like 30 minute, 1 hour. Then after I see the 5 minute or 1 minute candle. If I see touch and candle close below this, then I enter for the sell like this. If I touch and candle close in a 1 minute or 5 minute, I go for the long. Okay. And how okay stock market doing this instead of this? Same things, brother. Stock markets similar to the forex market. Yeah, stock markets included all these things. Yeah. If you see from like morning I mean like afternoon 4 o'clock Indian time, you can see market is been very sideways, very sideways. So we are on okay predictable for taking a trade. You can see this was the latest pullback. Market need to go upside from here, but it hasn't gone. It obeyed this one. Okay, I can see order block is here, order block is here. It's making so much of confusion. One more thing that we can do is we have to wait for New York season. I mean, yeah, New York season. Then we can take a trade. Look at this from 21 to 23, 23.8. That means it gone up to 25 pips. But for me, if you ask me, I'm in a long side. Okay, I mean, what is my view? I would say my view is buy until this area break. I have told you long time, 3110 until it break. I'm in a long side. Okay, time zone doesn't matter. Setup is better. Okay, you have to make a perfect setup. Like mark a zone, then take a trade. This was the proper inducement. Okay, this was the support made as a sell up to like this area. Everyone thought that it will grab this liquidity and it will come up to here, but it made a induce. Okay, then after it gone upside. Before it make a induce, you will find out okay market do a time pass. Okay, if it want to go upside or downside, you will find out market will do time pass. Just the way if you see here, it made a down move. Okay, if you also enter, you have to come out like next high candle. So if you see this is the fair value cap, you have to put your ASL some like this area, and you have to come out. If you think that I will wait up to here, okay, I will wait up to here, that means you would got a losses up to here. So before it makes a move, it do time pass, then it make a huge move like same as here. It did a time pass, then it made a huge move.
made a time pass, made a huge move. Here also, it didn't make any time pass. It's sudden fall, then again sudden fall. That was sellers already here. Now it's doing a time pass here and here, and obviously my point of view is long. Let's see. So many diagrams, so many zone which I have marked here. Let's remove this, okay, so that you can see clearly. Let's remove this so that you can see clearly. Okay, चार्ट थोड़ा ऊपर करो, ऊपर नहीं है, और भी ऊपर करो, अभी ठीक है. ओके, how sure do you are in your telegram free signals in which rate? Sorry, but I like I don't get it. What you like what you're trying to say? How sure do you are in your telegram free signals in win trade? Okay, you're asking me how much is sure short win trade. If you just scroll, you might see we do post a free group like one signals or two signals per day, and every signals we do post the reason. Okay, so we would say we have 100% sure shot, and I would say like 70 to 80 percentage, but obviously we have like 60 percentage and above. Okay, more than 60 percentage above, I would say. Okay, and it tells us the market will go for the long side. Okay, like this area 33, 26 to 33, it need to go. Okay, it need to go upside. What do you think, guys? आप लोग को क्या लगता है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? मेरे लिए तो भाई लग रहा है कि भाई ये वाला देखोगे तो भाई ब्रेकआउट तो हो चुका है. ठीक है, मेरे लिए तो भाई यहाँ से तुम लोग को बता रहा हूँ भाई तो जाएगा ये वाला ट्रेन लाइन को फॉलो करके, तभी मैंने बताया था. समटाइम इसीलिए आई जस्ट टेल यू कि भाई ऑर्डर ब्लॉक की मार्केट को रिट्रेस करके ऐसे कोई बात नहीं है, ट्रेन लाइन भी इम्पोर्टेंट होता है. एंड यहाँ से नीचे आने का भी चांसेस है व्हेन यू ड्रॉ फीवो. ओके, एंड आई कैन सी दैट फीवो ऑलरेडी ब्रेक, तो चांसेस आर दैट 70 to 80% ऑफ चांसेस दैट मार्केट नीड टू गो अपसाइड. Easily you need to get a 25 to 30 pips, and if I get a loss, that means it making us a trap by the strong SMC smart players. Okay, the smart players are making a trap for us. Okay, we can see from this side also, from this area also, that market need to go upside. Even though if you are getting a losses, that means we are perfect. They know what is you think. Okay, what you think. So that way they move the market. Okay, that way they move the market. देख रहे हो? Actually, it need to go upside. Somehow it's making a trap for us. Like they are reinventing the sellers also. आगे দিয়ে দিতে ওটা
Oh, okay, so I hope you can hear my voice again. Okay, give me signal. Okay, so what will be the SL? What if I take a long trade now? If you take a long trade now, last. Okay, so if you're planning for execution, 25. Uh, if your capital is small, I would say you can come out with 22, 30 pips. You can put your SL like this area, 30 pips. Because if it break this trend line, then market will come to this order block area, which is like 18. So that means you have to hold up to 40 pips. It's before getting too much of losses. You can come out in the 30 pips losses and take a trade from above this area up to this TPLSL from 26 to 33, 60 pips, maybe 70 pips. Okay, you can keep your SL below this trail line. That means like 22. You can keep it at 22. Okay, 3109. Okay, 3109. You can say that 3109, which is like this area. That is will be the perfect if you ask me. But if your balance is small, I would say 30 you can come out because market will fall up to this order block area. If it over, then only you will get a market. Then you can re-enter from here. Otherwise, you will get a proper trade from this area. Okay. Market is a buy. I've been telling you from this area also trend line. When it touches the trend line, I have been telling you. Still 3 minutes more. So if it close a candle, it will make us give us more accuracy that it will go upside. If not, then it will make us like wait for hitting our target. Okay. It seems that it will break this and it will go upside long. Okay, it will go as a long side. कहाँ से है? Okay, it's taking a time guys, it's taking a time. बहुत ही स्लो चल रहा है ना मार्केट. एंड हम लोग दूसरी करेंसी पर एनालिसिस किए थे, जैसे जैसे बीटीसी पर एक बार देख लेते हैं. बीटीसी ऐसे ही घूम रहे, ना जा रहे ऊपर की तरफ ना जा रहे नीचे की तरफ.
साइड उस पे चल रहा है। और जेपीआर मैंने देखा था, आप लोग को बताया था, ये आने से पहले ही नीचे जा रहा है। ओके, so this should be your perfect area to enter if you ask me in a 30-minute time frame. Okay, in a 30-minute, what you see here, this is the retrace. So market, at least from this area, market need to go to this fair value cap and you need to do a retrace. But it gone up to here and it started to fall now. So if you haven't taken it, it's okay. But this area is perfect area because market hasn't touched this fair value cap and it's imbalance. So it's an imbalance. We have to see this. We can enter in our JPY. NZD USD. There's no trade. Okay, no trade. USD. Okay, it's gone upside. Nice. Okay. And okay, अभी तक ये वाला नहीं गया. Way up to here. Fonta. Okay. After that, we need to go. Same as gold also. We need to go upside. Before that, we will check the DXY also. Okay, what is happening here? कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ, जा रहे हैं नीचे की तरफ. DXY नीचे जा रहा है. It was possible.